Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very short, a very interesting poem that is A Night in June. What is the night in June month? So let's just begin with this poem. The title of our poem is A Night in June, right? So we'll be studying about this poem. William Wordsworth, see, he is one of my favorite poet, and he is one of the favorite and one of the most renowned author of this poem. And apart from that, he has written several poems, right? And this poem helped launch the Romantic age in literature. When this poet came, na, he basically launched the Romantic age in the English literature with their joint publication lyrical ballads. Ballads means ये बहुत ज़्यादा छोटी छोटी स्टोरीज लिखते हैं और ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं, राइट? As a young man, William Wordsworth developed a love for nature. Yes, I told you na, he is a nature lover he is a nature lover author, right? पोएट है ये और ये हमेशा नेचर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं। अ थीम रिफ्लेक्टेड इन मेनी ऑफ द पोएम्स, बहुत सारी पोएम्स में इनका नेचर वाला थीम जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड ये बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो द सन हैज लॉन्ग बीन सेट, सन कैसा हो चुका है, सनसेट हो चुका है, सन जा चुका है। द स्टार्स आर आउट बाय टूज और थ्रीज, धीरे धीरे स्टार्स आ रहे हैं, वेदर कभी दो कभी तीन और उससे ज्यादा भी। द बर्ड्स दे आर पीपिंग येट, और बर्ड्स की चहचहाने वाली आवाज अभी भी आ रही है। अमंग द बुशेस एंड ट्रीज, और देखिए हम एक ट्री के बारे में या एक बुश के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बहुत सारी की बात कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है, अमंग आ रहा है, राइट? देयर इज अ कुकू एंड वन और टू थ्रशेस, और कुछ कुकू भी हैं और कुछ थ्रशेस भी हैं, काइंड ऑफ झुंड भी हैं इनके क्या कहते हैं, बुशेस के, राइट? एंड अ फार विंड ऑफ दैट रशेस, और बहुत ही ज्यादा अच्छी हवा लहरा रही है। एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेस, और साउंड ऑफ पानी की जो आवाज है, वो जैसे पानी बहुत तेज चलता है जब वो फोमी स्ट्रक्चर में आता है, तो तब कैसी साउंड होती है, गशेस। देखिए, rushes, rushes and gushes. These all three are rhyming word. If anybody, this poem, actually what happens with William Wordsworth, कि poems इतनी famous होती हैं कि sometimes while the examiner is designing the poems, he used to keep these poems in between as reading comprehensions में ये poems आ जाती हैं, and in that they literally ask what are the rhyming words in the paragraph 3. Right, so this you can find out the rhyming words. And the cuckoo's Sovian cry. Sovian means independently the cuckoo is crying. Fill all the hollows of the sky. Sky के सारे जो चीजें बहुत ही ज्यादा सूनी हैं उनको पूरा कर देती हैं। Who would go paragliding? तो पैराग्लाइडिंग, कौन जाएगा पैराग्लाइडिंग जब इतनी ज्यादा सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी? एंड व्हाट इज पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग इज बेसिकली के अंदर एक बेसिकली देयर इज अ kind of a canvas. Canvas is a cloth that is tied on the rope and have a seat where we just go in high feet and we do paragliding and discover all the mountains high feet in the sky. And this paragliding is basically done on the hill station like Dharamshala, that is situated in Himachal Pradesh, or you can say Rishikesh, right? In London. And masquerading. Masquerading is again the confusing on such a night or June ki night mein, with that beautiful soft heart, a soft half moon की moon कैसा है, एकदम हाफ है, सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, वाइट फोमी स्ट्रक्चर में। and all these innocent blisses, और सारे के सारे innocent people who are just blissing, they are just taking all the blessings, and on such a night as this is, एक ऐसी night है बहुत ही ज्यादा beautiful है. So I hope you all understood this poem, and one homework for you all, that you all are going to write down at least 10 names of the poem that has been written by William Wordsworth, because this poet is very famous, and of course one of the famous reading comprehensions of the poem are basically given from this poet, that is William Wordsworth, because he loves nature so much and he used to do a lot of comparison of a person with the nature. Please go through this poem, learn all the word meaning. Stay blessed. Thank you.